respected teachers, dear students of our institution and students from various schools and colleges, it is our privilege to extend a warm and healthy welcome to you to Shiksha Yatra Scholarship Career Guidance and Counseling Program. Today's program is a sincere initiative of our institution to guide young minds, create awareness about career opportunities and to illuminate the path towards a successful future. Our gracious presence truly adds dignity to this occasion. We start the program with the thoughts of our holy books. We begin this auspicious program. Let us reflect upon a few noble thoughts from our holy scriptures which remind us of the supreme value of knowledge and wisdom. From the Bhagavad Gita, as it states, education is that which liberates. From the Holy Quran, as it states, read in the name of your Lord who created and he taught man what he did not know. From the Bible, which states wisdom is the principal thing, therefore to get the wisdom. From the Guru Granth Sahib, true education dispels darkness and brings light. So dear students, remember knowledge is your real power. May these sacred thoughts inspire us and bless today's program with purpose and success. To create a serene and spiritual atmosphere, we now have a devotional song presented by our talented students. I request everyone to maintain silence and enjoy the soulful redemption. Now I request Bhagyashree and Nilama from class 11 to dedicate a devotional song and to give the good start for today's program. Come on. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೆ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ, ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ, ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಕುಂಚಾರತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾನತಿ, ಬಲವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ. ಲೋಕವೇ ರಂಗಭೂಮಿ, ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, dear students, for the beautiful and divine presentation. I now request Shobhan Alam sir
to kindly deliver the welcome address and formally welcome the gathering. Shubhan sir. Respected Director, Principal, distinguished faculty, dear student, and our esteemed guest, Atikur Rahman sir. Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone present here. My name is Muhammad Sauban Alam, chemistry faculty. It is my privilege and pleasure to welcome you all on behalf of our coaching institute, Shahin Vision College, Yadgir. Today is a special occasion for us. We have gathered to gain inspiration, guidance, and renewed motivation. In the journey of learning and preparation, knowledge is essential, but motivation is the force that gives direction, strength, and purpose to that knowledge. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to Shiksha Yatra Scholarship Career Guidance and Counseling Program. It gives me immense honor to warmly welcome our distinguished guest अतिकुर रहमान सर विद दिस वर्ड. ज़िंदगी के सफ़र में जब अंधेरा छा जाए, ज़िंदगी के सफ़र में जब अंधेरा छा जाए, कोई रास्ता ना दिखे वो मौसम आ जाए, ऐसे में ज़रूरी है कोई रहनुमा आ जाए, ख़त्म कर जाए सारी नाउम्मीद की साए. एंड सच रहनुमा इज़ अमंग अस अतिकुर रहमान सर. Your presence among us today is truly inspiring. Through your words, experience, and insight, you have positively influenced many lives, and we are confident that today's sessions will ignite confidence, clarity, and determination in our student. To our student, this session is an opportunity to learn not only from book but from real life experience. I encourage you all to listen attentively, reflect deeply, and carry forward the lesson you gained today in your academic and personal journey. I would also like to acknowledge the effort of our management and faculty members who have made this session possible. Once again, I extend heartful welcome to our esteemed speaker and to everyone present here. I hope today's interactions will be enlightening, motivating, and truly memorable. Thank you, and I wish you all an inspiring session ahead. Thank you. Thank you so much, sir, for your gracious and thoughtful welcome. It is now time to introduce and honor our respected dignitaries who have graciously accepted our invitation and are seated on the dais this evening. First and foremost, we begin with the dignitaries from our own esteemed Shahin institution. So, the day's chief guests of our today's event are Atikur Rahman sir, career counselor and life coach. Yes, the further chief guests of today's program are Mr. Alam Chaudhary sir, respected member of the management, Shahin Vision School and College, Yadgir. The next chief guest of the day's program is our beloved principal sir, Mr. Channaraju sir, esteemed principal of Shahin Vision School and College, Yadgir. Next, we take the pride in honoring our distinguished guests from the other esteemed institutions. First of all, I'd like to introduce Mr. Samuel sir, respected principal and management member of Ratnam English Medium High School, Yadgir. The next honorable chief guest is Shahnur Sambrekar sir, the director at Shahin Group of Institutions. And the next chief guest is Faizan Danish sir, the branch head, Pune, Shahin. I now request the members of the management to kindly come forward to facilitate our esteemed dignitaries today. First and foremost, I request our physics sir to facilitate our day's chief guest. Please
welcome our beloved lecturer to facilitate our day's dignitary Atikur Rahman sir. Give a round of applause, dear students. Tamanna. Yes, come on students, give them a good round of applause please. Yes, now I request lecturer in botany Mr. Santosh sir to facilitate Mr. Samuel sir, respected principal and management member of Ratnam English Medium High School, Yadgir. Now I request lecturer in chemistry Mr. Shobhan Alam sir to facilitate the next chief guest of the day's program, Faisal Danish sir, the branch head, Pune. So now I request lecturer in botany Mr. Santosh Mantole sir to facilitate our beloved chairman Alam Chaudhary sir. सर मैडम अंकिल सर ये हमारा हम मेजबान है सर Yes. Where is Venkatesh sir? I have already called. Now I request Santosh sir to facilitate Shanur Samrekar sir. Wait. One more. You don't have one more? Santosh sir. One more for Santosh sir. For Alam sir. Okay. Thank you so much for all the staff members for the cooperation. Yes. Now I request my beloved colleague Ifa Samreen ma'am to give a brief introduction about the day's dignitary. Please welcome Ifa Samreen ma'am on the dais please. क्या लगा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Good afternoon to all. Respected members of the management, our honorable principal, esteemed dignitaries of the dais, teachers and my dear students, a very good evening to one and all. It is my proud privilege to introduce the resource person for today's Shiksha Yatra Scholarship Career Guidance and Counseling Program. Our distinguished speaker, Mr. Atikur Rahman sir, is a renowned career counselor and life coach known for his deep understanding of career planning, scholarship opportunities, and student guidance. With his vast experience, he has successfully guided numerous students
towards choosing the right academic paths and building confident, goal-orientation futures. His sessions are highly appreciated for their practical approach, clarity of thoughts, and motivational impact. He strongly believes that the right guidance at the right time can transform a student's life. And today we are fortunate to benefit from his knowledge and experience. We are confident that his insights and guidance will be extremely valuable to our students and will help them make informed decisions about their future careers. With great respect and honor, I once again welcome Mr. Atikur Rahman sir to our institution and request him to kindly address the gathering. Thank you. Wire can this wire can move to there. Yes, sir. For sure, you can. कितनी दूर आता है देखो इतना ही आता स्टेज पे कवर हो जाएगा नहीं आता स्टेज पे कवर हो जाएगा नीचे है नो हमारे फैजन भाई मेरा लैपटॉप जो है टेबल है चेयर लेके इधर आ जाइए नीचे नीचे हाथ तो सर सर ये लैपटॉप जी कैमरे का फ्रेम आ जाएगा नया था बोलते नहीं लेगा ना कंफर्टेबल है अच्छा ओके अब वो फ्लो में चले जाता है ये काफ़ी है ना काफ़ी ये मैं सर नहीं बढ़ाओ बढ़ गया ना सर क्या बात है 100% हो गया दिख रहा हूँ आप चेंज करके जाएंगे थोड़ा ऐसा करो स्क्रीन ओके मेरे सर थोड़ा रिमोट है ना या फिर सर अगर मैं उधर रखूँगा ना हाँ अच्छा रहेगा नो रिफ्लेक्शन ये सही रहता ये सही है तो ऐसा लाइट पड़ रही है नहीं ये लाइट पड़ता सर लाइट पड़ रही है ये एंगल ठीक ये काम करेंगे ना आपको देखना है तो बिहार देता हूँ ना वही चलिए चेयर देखते हैं ओके आप रख दीजिए हेलो ऊपर लगो हेलो हेलो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद. In the name of the Almighty Creator, the most beneficent, the most merciful. Respected authorities of the management, respected principal, teachers, the representative group from Shaheen Group of Institutions, Bidar, and my dear champions, contributors, leaders, and nation builders. Very good evening to all of you. Good evening, sir. How are you all? Fine, sir. How are you all? Fine, sir. How are you all, boys? Fine, sir.
ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಬ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠವನ್ನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? बैग 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 चाहिए ना सर. लर्निंग वगैरह जो मिलेंगे वो बैग चाहिए ना, जैसे तरकारी वगैरह लेके जाते तो बैग चाहिए नहीं चाहिए? तो लर्निंग के लिए कैसे लर्निंग घर को लेके जाएंगे? बुक्स में लेके जाएंगे? बुक्स भी नहीं दिख रहे बच्चों के हाथ में, किताबें भी नहीं है, पेन भी नहीं है, सब खाली हाथ बैठे हैं. तो अभी ये जो सेशन चलेगा इसमें जो आपको लर्निंग मिलेगी वो कहाँ डाल के ले जाएंगे आप? बैग भी नहीं है आपके हाथ में, आप लोगों ने भी अरेंजमेंट नहीं किया, क्या करेंगे शानूर सर? प्लास्टिक कैरी बैग तो देना था ना. वेयर विल यू टेक योर लर्निंग्स होम? ब्रेन है, ब्रेन, वाओ वंडरफुल. मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के लिए तालियां हो जाए. ब्रेन है हमारे बच्चों के पास. वेरी गुड, सुपर, वेरी नाइस. आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली थैंक ऑलमाइटी क्रिएटर फॉर giving me this opportunity to come to Yadgir. This is a place which I have been hearing from a very long time. I did my engineering from Gulbarga, but very few times I got the chance to visit Yadgir, though it was a very close place. But the Creator has His own plans. Whenever He intends, He gets people to different places. I think this was the moment, this was the hour, and this was the occasion, such a wonderful occasion of Shiksha Yatra, very well conceptualized, planned and initiated by Shaheen Group of Institutions, and this is going to cover multiple cities in Karnataka. Yesterday it started, we were in Basava Kalyan, more than 600 students plus attended our workshop, and we gave some idea to the students about how we have to select our career, how we have to come out from confusion state to clarity, right? हमको बहुत सारे चीज़ों के बारे में confusion होता है, yes और yes, और उस confusion से हमको बाहर निकलकर clarity में आना होता है, yes और yes. लैंग्वेज कौन सी चलेगी आपको? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या सब मिलाकर हिंग्लिश? हिंग्लिश वाला चलेगा? चलिए सब लोग एक छोटी एक्टिविटी करेंगे. आप लोग स्मॉल एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो मैं जब कहूँगा राइट तो आप राइट हैंड लिफ्ट करेंगे, राइट. और हाथ लिफ्ट करने में सर देयर इज समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस, नथिंग लाइक दिस. सो राइट मतलब एकदम स्ट्रेट राइट, वेरी गुड. लेफ्ट, सुपर. बोथ, रेडी? तो मैं राइट बोलूंगा तो राइट, लेफ्ट बोलूंगा तो लेफ्ट, बोथ कहूंगा तो बोथ. रेडी? राइट, लेफ्ट, बोथ, बोथ, राइट, लेफ्ट. वेरी गुड. नाउ द गेम विल चेंज. सेकेंड राउंड में मैं जब कहूंगा राइट इट विल बी लेफ्ट. व्हेन आई से लेफ्ट इट विल बी नो. व्हेन आई से लेफ्ट इट विल बी बोथ. Oh, first when I say right, you said left. No, and then left is going to be both. Oh, right? So right is going to be left. Left is going to be both is going to be. Ah, you got it right. So come on, everybody, right. Very good. Right matlab left. Left. Good. Both. So अभी सही हुआ. Come on everybody, right, both, left, left, both. Left का मतलब both, both, left, right. टाइम फिश बोलते ना, ऐसा जो है. फर्स्ट राउंड इजी था ना, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट, राइट बोले तो राइट, बोथ बोले तो बोथ. सब एकदम खुशी से कर रहे थे. बाद में मामला कंफ्यूजन का हो गया, डिफ़िकल्टी का हो गया. करियर का सिलेक्शन भी ऐसे ही कंफ्यूजन का रहता है जैसे थर्ड राउंड में था. मैं मेडिकल करूं, इंजीनियरिंग, मैं साइंस में जाऊं, क्या समझ में नहीं आ रहा. राइट लेफ्ट, लेफ्ट बोल राइट, फुल कंफ्यूजन, राइट? अब ये जो सेशन आपका है
इस सेशन में एंड तक जब जो हमको टाइम मिलेगा, वॉट एवर टाइम आई गेट till we finish the program, I will try to share my experience working with thousands of students in different parts of Karnataka, different parts of India, and also have traveled about 18 different countries, meeting different students, teachers, educationists, sports people, prime ministers, achievers, and so many great personalities. Okay, so with that experience, I am going to share कुछ inputs मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ों को share करूंगा. उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन बाय द एंड ऑफ द सेशन क्लैरिटी में बदल जाएगा. कितने लोगों को क्लैरिटी चाहिए? हाँ, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं चाहिए. जिसको चाहिए सब हाथ रेस करना चाहिए. वेरी गुड, बहुत सुपर. अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, आस्क्ड हाउ आर यू. सो हाउ आर यू. तो अगर आपके पास वो जो ब्रेन है बोले ना, उसमें सबसे पहला लेसन आज आप घर अगर लेकर जाना चाहें, इफ़ यू वांट टू टेक द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन टू योर होम, नॉट जस्ट टेकिंग होम, बट इफ़ यू वांट टू डेवलप दैट एज योर हैबिट, इफ़ यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ दैट टिप, वो क्या होगा मालूम? कि फाइन बहुत कमज़ोर वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है. मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फाइन और गुड कौन सा अच्छा है? गुड और ग्रेट, ग्रेट और सुपर्ब, सुपर्ब और मार्वलस, मार्वलस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो क्या ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಫೈನ್ಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡು, ಗ್ರೇಟು, ಮಾರ್ವಲಸ್, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? घर में अम्मी अब्बू बोल के भेजे, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಮಹಾನು, ನಾನು ಗ್ರೇಟು, ನಾನು ಮಾರ್ವಲಸ್, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೈ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ड फाइन? सो फाइन इज़ अ वेरी लो वर्ड. जो लूजर्स, जो जिसका कोई पर्पस नहीं है ज़िंदगी में, जिसका कोई बड़ा ख्वाब नहीं है ज़िंदगी में. देखिए अभी मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ लिखा है आपके कॉलेज का. सब लोग पलट कर देखिए वो बोर्ड पर कौन सा वर्ड है? विजन. जितने लोगों का बड़ा विजन रहता है उन सब का जो वर्ड्स यूज़ करने का वो पावरफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं. मैं बोला कि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, आई मीट सो मेनी पीपल. व्हेन आई आस्क देम हाउ आर यू, दे नेवर यूज फाइन. दे सेड आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग सुपर, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम रॉकिंग, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऐसे ही बोलते हैं बिकॉज दैट इज देयर माइंड सेट, दैट इज देयर थॉट, दैट इज देयर हाउ दे थिंक अबाउट द लाइफ एंड थिंग्स दे डू. तो इस एज में, जिस एज में आप लोग हैं, जिस उम्र में अल्लाह आपको इस वक्त रखा है, बहुत पावरफुल एज है जहां आप अपनी ज़िंदगी के बड़े ख्वाब, बड़ा विज़न, कुछ करने का हौसला, कुछ पाने की अरमान और उसके लिए मेहनत करना, आगे बढ़ने का, ये पूरे क्वालिटीज़ इस एज में आपको भगवान खुदा अल्लाह हमको देते हैं. तो हमको पहली बात क्या यूज़ करना चाहिए? पावरफुल वर्ड्स. तो हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? ये तो समझ में आ गया सर. डाले बास्केट में, तो सब लोग करो टाइम टाइम, सब लोग करना. अब हाथ में लो, ग्रेट सुपर लिए टाइम टाइम, ऐसा करे तो जाता अंदर. लड़कों डाले अंदर है. हाँ, वेरी गुड. अब अगर मैं ऐसा बोला, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा बोला तो ಏನಾದರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? आई एम यूजिंग द वर्ड properly, but my body language is not powerful. So whenever you use a word, it should be powerful, it should be very, very meaningful, and it also should show in your body language. I am great, I am doing superb, I am extraordinary, I am going to win, I am a champion, I am a leader. ये बॉडी लैंग्वेज भी आपका उसको प्रूफ देना चाहिए, राइट? सो अब पहली बार क्या करें? अपने बास्केट में डाले ना, वापस निकालो, निकाले. अब दोबारा वर्ड भी बोलना, बॉडी लैंग्वेज भी बोलना. एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? सुपर, सुपर, ऐसा रहना बॉडी लैंग्वेज. वंस मोर, हाउ आर यू ऑल? यस. ये आज के लिए नहीं, सिर्फ कल मॉर्निंग में आते ही क्लासरूम में टीचर आते, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसा बोलते हैं. ये हमारी प्रैक्टिस है. बचपन से हमको यही सिखाए ना, गुड मॉर्निंग सर.
हम अभी भी वही करते हैं। आज जो मैं आपको सिखाया वो टुमारो मॉर्निंग आप नहीं करना इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट विल टेक टाइम. But few students, few people, if they are really serious, if they have got the meaning of what I have told and taught you, they will practice it in the house today evening. मिरर के सामने खड़े होंगे, I am great, ऐसा नहीं, I am great, ऐसा नहीं, कुछ तो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. Tomorrow morning when they come, they will have a different body language. When your teacher wishes, you will wish with powerful words. तो सीखे क्या नहीं सीखे? अब प्रैक्टिस कब करेंगे? शाम में घर को जाने के बाद बोलना, ग्रेट मॉर्निंग अब्बू. अब ग्रेट मॉर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेट आफ्टरनून, ग्रेट इवनिंग, वॉट एवर. नाउ आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग. सो वॉट एवर यू नो, बिकॉज यू हैव ब्रेन, यूज इट और उसको पावरफुल वर्ड्स के साथ बोलना. अब आपके अब्बू अम्मी बोलना, आज मेरी बेटी को बेटे को क्या हो गया. देन इज द प्रूफ दैट यू हैव लर्नड, you have applied and you are growing. Otherwise ऐसे इवेंट बहुत सारे होंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन क्या होगा? वेरी नाइस, यहाँ सुनेंगे, यहाँ से छोड़ के बाद में गए तो वही हाउ आर यू, ओ बहुत थक के आ गए हम, मैं आज बहुत मेरे को जो है ये हो रहा, जाके सो जा. When you go to home today, you should enter the house with wonderful energy, use wonderful word and also your body language. Will you do that? Yes or yes? Very super. Do you want a story? Because now we don't have much time, right? हमको कब खत्म करना है सर? 6 बजे खत्म करना है, right? So we will straight away come to our topic, which is about career guidance and how we have to select our career. Why students choose the wrong career? क्यों बहुत सारे लोग आज इंडिया में जो जॉब करते हैं, जो वर्क करते हैं, they wait for Friday evening. They wait for Friday. Why? सैटरडे संडे छुट्टी. वाह, फ्राइडे आफ्टरनून का टाइम शुरू होते ही सबके चेहरे मुस्कुराना शुरू हो जाते. 4 बजे होते ही घर भागने की तैयारी करते रहते और वही मंडे मॉर्निंग को कर्स करते, कई को मंडे आया दोबारा. क्यों? वापस उठकर ऑफिस जाना है. इसलिए करते हैं क्योंकि दे आर नॉट एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग. That happens because of the choice of the wrong career. Because they have done a choice or a decision during their school or during their educational life where they had to take proper decision. और वहाँ किसी वजह से गाइडेंस नहीं मिली, सिचुएशन नहीं था, या आपकी ज़िद ने, या पेरेंट्स की ज़बरदस्ती ने, या ख़ानदान में किसी ने कहा यही करना है, इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गो इनटू रॉन्ग प्रोफेशंस, दे गो इनटू रॉन्ग रोल्स, दे गो इनटू रॉन्ग जॉब्स. दैट इज व्हाई दे वेट फॉर अ फ्राइडे इवनिंग. और more importantly to note is they always curse a Monday morning, which we should never do. And I think you all are lucky because इस तरह के सेशंस और प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं so that we can give you some idea through our experience, through our life journey, what we have learned, and to see how you can make a better decision. You know why? Because you are not just the future of India. ನೀವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. Whatever you do in your 8th, 9th, 10th, 11th, 12th is very important for all of us. We want each one of you, आप सब हर कोई अपने अपने सही टैलेंट को पहचाने, अपने सही डिस्कवरी करे अपनी पर्सनालिटी की, और सही फील्ड में जाएंगे तो भारत हमारा डेवलप होगा. 60% of the people are not in the right field, इसलिए as a whole our India is not growing in many fields because right person at the right time for the right job नहीं होता है. जिसको IAS ऑफिसर बनना वो कॉमर्स का अकाउंटेंट बन के आराम का ज़िंदगी गुजार रहा है. किसी को कोई साइंटिस्ट बन सकती है, वो एक टीचर बन के ज़िंदगी गुजार रही है. कोई इंजीनियर बन सकता है, वो इंजीनियरिंग छोड़ के जो है कोई दूसरा जो है फील्ड पकड़ लिया. अब इंजीनियरिंग भी ठीक नहीं किया और दूसरा फील्ड भी ठीक नहीं किया, अब जो है वो कंप्यूटर क्लास पढ़ा रहा है. बहुत सारे इस तरह के आज यूथ्स जॉबलेस भी हैं. बहुत सारे लोग अपना वर्क, अपना प्रोफेशन, अपना काम बहुत बेजारगी से करते हैं. तो आप इस तरह के
सिचुएशन में लाइफ में पढ़ना चाह रहे हैं? नो, आई वॉन्ट लाउड वॉइस. डू यू वॉन्ट टू बी इन दिस सिचुएशन? बॉयज से आवाज नहीं आ रही है. बॉयज, डू यू वॉन्ट टू बी इन सच सिचुएशन? नो. So for that, I have a small story. How many want a story? Story. सब लोग बोलना story बोलना. Okay, wonderful. Story ऐसी है, you know Google मालूम Google तो सबकी ड्रीम कंपनी होती है. उस कंपनी में जॉब मिलना, और उस कंपनी में जॉब मिल गया तो लोग बोलेंगे कि अच्छा, आर यू फ्रॉम गूगल? वाओ. या फिर आप गूगल का जैकेट या ट्रॉली लेके जाते हैं एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, लोग बात राइट. इन्फोसिस का, बड़े बड़े कंपनी का जैकेट मिलता, बिकॉज दे हैव अ वैल्यू. इट्स अ ड्रीम जॉब फॉर मेनी पीपल टू वर्क फॉर सच बिग कंपनीज. ऐसा ही एक लड़का, मतलब आई डिड माई अगेन इंजीनियरिंग इन 2004, राइट. उसी दौर में एक लड़का गूगल में जॉब कर रहा था और उसकी सैलरी इन 2004 was 1,25,000 rupees. How much? In how many? 20 years back. 3 साल वो लड़का जॉब किया और 3 साल के बाद he wrote a resignation letter. And you know, उस दौर में 2003-4 के दौर में anybody who scores above 80 compulsorily he has to take science. अगर कोई घर में लड़का लड़की 80% के ऊपर स्कोर करके बोला मम्मा मुझे साइंस नहीं जाना, आई वांट टू बिकम अ राइटर, आर्ट्स में जाएंगे, तो माँ जो है 2 दिन डिप्रेशन में रहती थी. इसको 80 मिला है, शी इज़ नॉट टेकिंग साइंस. इसको 80 मिला है, ये जो है साइंस नहीं लेना चाह रहा है, और वो भी इंजीनियरिंग लेना या मेडिकल लेना. ये कोई नहीं लेता तो उसको सब इतना प्रेशर करते कि नो बाबा, यू हैव स्कोर्ड 80 and 85 and 90, यू शुड टेक दिस फील्ड. और वो भी गूगल में जॉब है और वो लड़का जॉब छोड़ रहा है तो उसको कोई भी बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं. इसलिए वो लड़का जॉब को रिजाइन किया, अपने बॉस को दिया. बॉस ने समझा कि इसको सैलरी और चाहिए, सो ही सेड आई विल डबल योर सैलरी. सो सर, इट इज नॉट अबाउट माई सैलरी, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस जॉब. सुबह आना, वही कोडिंग करना, और वो मैं बहुत कुछ सीख भी नहीं रहा हूँ, मुझे पैशन भी नहीं आ रहा है, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ. इट इज़ नॉट अबाउट मनी. यू नो, माई फ्रेंड्स आर अर्निंग जस्ट 10,000, 15,000 एंड आई हैव अर्नड 1,25,000 पर मंथ फॉर द लास्ट 3 years. आई हैव इनफ सेविंग, मेरे पास बहुत सेविंग है. द प्रॉब्लम इज नॉट मनी, बट आई एम नॉट एंजॉइंग दिस वर्क. आई एम नॉट एंजॉइंग दिस जॉब. एवरी डे मॉर्निंग, द फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू कम एंड एंजॉय, बट नाउ आई एम नॉट एंजॉइंग. और उस लड़के का पैशन था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. क्या था? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. वो जाकर रेजिग्नेशन देता है, उसके बाद घर वालों को नहीं बोलता. अगर घर वालों को बोला तो क्या होगा सर? उसको अच्छा मार भी पड़ेगी. वो चेन में डाल के उसको ले जाकर गूगल ऑफिस में बोलेंगे कि तुम घर को ही मत भेजो, इसको यहीं बांध के रख लो. ऐसा दौर था. तो ही सेड आई एम गोइंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड ही हैड सेविंग्स, सो ही टुक DSLR कैमरा. He purchased and he went to the jungles of Mysore. और वो 8 महीने वहाँ रुका, वहाँ स्टे किया, और ऐसे ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का पिक्चराइजेशन उसने किया, कैप्चर किया. उसका पैशन था. दिन रात भूखा प्यासा, घर से दूर, घर के कंफर्ट से दूर, घर के आराम से दूर, माँ बाप से दूर, गूगल जैसी कंपनी का एक एकदम लग्जरी और वो नाम और फेम, सबसे दूर कहाँ गया लड़का? ये मैसूर के जंगल में गया. लेकिन 8 महीने के बाद जो वो फोटोग्राफी किया, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दीज चैनल्स कॉल्ड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, NGC, एनिमल प्लैनेट, बड़े बड़े चैनल्स हैं इंटरनेशनल जो इस फील्ड में काम करते हैं. उसका काम जब इन लोगों ने देखा तो BBC, यू नो, दे गिव हिम अ प्रोजेक्ट. अब मुझे बोलिए, उसको 3 महीने का प्रोजेक्ट मिला. उसकी सैलरी कितनी थी? इंटू 3, बोलिए कितना होता है? 3,75,000, 4 लाख मान लो भाई. 3 महीने में कितना सैलरी मिल रहा है इसको? 4 लाख. ये 8 महीने ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किया, उससे ज्यादा ही वांटेड टू एंजॉय हिज पैशन, एंड ही गॉट द प्रोजेक्ट फ्रॉम BBC ऑफ 3 months फॉर 1 crore rupees. कितने करोड़ रुपीज? But he was again not focused on money, he was focused on his passion. He was enjoying every moment, and that project also he got, वो भी वो enjoy कर रहा था.
और वो उसके फोटोग्राफी के वर्कशॉप्स में, उसके जो टैलेंट के वर्कशॉप्स का कोर्स स्टार्ट किया, 6 महीने तक उसके कोर्स में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता था। तो अगर वो गूगल में होता तो 1 करोड़ रुपए कितने सालों के बाद कमाता? 1.25 लाख के हिसाब से कई साल लग जाते। करेक्ट? उस लड़के ने किया क्या? What did he do? He discovered his inner talent. He discovered his passion, जिसमें किसी को बोलना ना पड़े कि तुम जाओ फोटोग्राफी करो, ये लो बेटा कैमरा बैग लो जाओ। नहीं मम्मा मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, तब भी जाओ, किसी ने बोला उसको? अगर बोलता तो लोग रोक लेते, इसलिए किसी को बताया भी नहीं वो। और जॉब छोड़ने के पर तो पूरा उसका बाइकआउट हो जाता, वो भी नहीं बताया। उसके पैशन को उसने फॉलो किया, उसके इंटरनल टैलेंट को उसने फॉलो किया, और बाद में जाकर पैशन को फॉलो किया तो पैसा कम मिला कि पैसा ज्यादा मिला? कितना ज्यादा मिला? 3 महीने में 1 करोड़ रुपीस मिला। 3 महीने में वो सिर्फ 4 लाख रुपए कमाता, बराबर। और अगर वो 1 करोड़ रुपए वो जॉब में कमाना होता तो उसको मिनिमम 4 साल काम करना होता, तब जाकर वो 1 करोड़ रुपीस कमाता। सो द पॉइंट एंड द न्यू लेसन यू ऑल हैव टू टेक इज you have to find your inner talent which God has given you. You have to find out your passion. आपका पैशन आप फाइंड करना चाहिए और आपका इनर टैलेंट आप डिस्कवर करना चाहिए. आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके पास टैलेंट नहीं है? Very good. No hand is raising, which means you are alert and you believe you have a talent in you, right? Every person on the face of the earth has unlimited talent. Now I want you to raise this thumb. Everybody raise your thumb. Closely अपना फिंगरप्रिंट देखो. हाँ देखे. अब बाजू वाला का फिंगरप्रिंट मैच करो. मैडम माड़ी नहीं हो. बाजू वाला का फिंगरप्रिंट मैच होता क्या देखो. तुम्हारा उनका सेम है क्या? सेम है. देखो बाबा, तुम्हें यादगिर है, तुम्हें यादगिर है तो सेम गवर्नमेंट तो सेम रहना ना. तुम्हें शाइन विजन कॉलेज, तुम्हें भी शाइन सेम रहना ना. है किसी का सेम? नॉट इवन ट्विंस. ट्विंस जो पैदा होते हैं ना 1 मिनट के डिफरेंस में, दे ऑल्सो डू नॉट हैव द सेम आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट, विच मीन्स भगवान ने हमको सबको यूनिक बनाया है. आप जैसा मॉडल दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ, ना है, ना आगे होगा. एवरीबडी इज डिफरेंट. एवरीबडी इज इमेंसली टैलेंटेड and the talent is not limited. Talent God Almighty ಭಗವಾನ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಷ್ಟ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ? ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಝೋನ್? कंफर्ट जोन. चलता है ना, मुझे 50 मिल रहा है, मुझे तो अभी 2 साल में शादी कर देंगे, मैं क्यों पढ़ना, राइट? मुझे ऑलरेडी 45 मिल रहा है, मेरे पापा का दुकान है, वो तो बोल रहे हैं कि तुझे दुकान पर ही बैठना, मैं क्यों पढ़ना. इसलिए जो है लोग डिस्कवर भी नहीं करते और उस टैलेंट को वेस्ट करके वो अपने टैलेंट का जो है पूरा गलत इस्तेमाल भी करते हैं और वेस्ट भी जो है करते हैं और यूज़ करके आगे नहीं बढ़ते हैं. So what is the lesson is you have to discover your talent and you have to discover your passion and accordingly have what vision? High vision. You should have high vision. That's the first thing. Now why career guidance? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? क्यों करियर गाइडेंस के बारे में मालूमात लेना है? बोलिए some inputs. 1-2 ಲಡ್ಕಿಯಾ बोलिए, 1-2 ಬಾಯ್ಸ್ बोलिए. ವೈ ಯು ಥಿಂಕ್ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಈ ಪಾಠ, ಇಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ತುಂಬ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ? क्यों करना चाहिए ऐसे वर्कशॉप्स? जी ವಂಡರ್ಫುಲ್. जो ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್.
Only if you are confused, you want to get clarity. If you think you are in confusion, but you know, I know ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, when you approach counselors and coaches and senior people with experience, you will get clarity, and clarity is power. Clarity is power, because through that you can make a proper decision, you can use your talent, you can enjoy your work, and you can become a successful person in life. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೋದರೆ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾರೂ ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜೀವನ सक्सेसफुल जीवना. आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, दुनिया में आए ऐसा वैसा कुछ भी किए, नो प्लानिंग, नो विजन, नो एस्पिरेशन, नो ड्रीम, नथिंग, दुनिया पर कुछ भी किए, बाद में जले गए. आपके दुनिया से जाने के बाद आपके घर वाले, मेरे घर वाले 2 दिन रोए, तीसरे दिन वो लोग अपने अपने काम पे भी जाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे. ऐसा लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ सक्सेस. व्हेन यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, पीपल शुड मिस यू. When you go from this world, people should realize your value. Because of that person, in Yadgir, these problems used to get solved. Because of that individual, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 21st century, ಈ ಸೆಂಚುರಿ ಯಾವ ಸೆಂಚುರಿ? 21st century करियर गाइडेंस याके ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ पेरेंट्स के हैं अरमान. सर, पेरेंट्स के हैं अरमान. मैं डॉक्टर नहीं बनी, अब मेरी बेटी डॉक्टर बन को दिखाना. बिकॉज मैं नहीं बन सकी तो कौन? मेरी बेटा बनना, नहीं तो बेटी बनना. नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान में सब इंजीनियर पढ़े, वो तुम क्या करते नहीं मालूम, तुम्हें इंजीनियर ही करना. कई को बोले थे क्या है ये हमारा, सबसे जोर से बोलो, सब लोग बोलो, ये हमारा अरमान है. तो करियर गाइडेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि पेरेंट्स के हैं अरमान, टीचर्स बेचारे हैं अनजान. सॉरी फॉर द मिस्टेक. प्रॉब्लम इज हमारे टीचर्स को कुछ करियर के बारे में मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन से बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा बच्चा किस फील्ड में महारत हासिल कर सकता है, कौन से नए करियर्स आए हैं. वो इट इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ अवर टीचर्स, बट हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि क्लासेस कंप्लीट करो, सिलेबस, टेस्ट, असाइनमेंट, मिड टर्म, ये सबमिशन, वो सबमिशन, उसमें उनको टाइम नहीं मिलता. तो पेरेंट्स के हैं अरमान, टीचर्स हैं अनजान, और बच्चे हैं परेशान. तो इसके लिए करियर गाइडेंस को आज बताना, समझाना, बोलना जरूरी है. बात समझ में आ रही है? पेरेंट्स हैव देयर विशेस, टीचर्स हैव नॉट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ऑप्शंस and the talents and skills of the children, because they have to complete syllabus, they have to do the examination and all those things, and ultimately you and me or students are totally in confusion. And these kind of workshops are here organized to get that clarity as to how you should select your career, which I have already touched upon few points, और कुछ points आगे मैं आपको बताऊंगा. तो एक बात तो ये है. दूसरी बात, करियर जो है इज नॉट अ जॉब. सब लोग करियर को क्या समझते हैं? व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन करियर? सर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर, आई वांट टू बिकम डॉक्टर. करियर इज नॉट अ जॉब. ठीक, क्या है फिर करियर? आई एम सेइंग करियर इज नॉट अ जॉब, बट करियर इज समथिंग एल्स. व्हाट इज इट? पैशन. और क्या है बोलो? इट्स पैशन एंड service. Very good. We should have a round of applause to निम्मा पहचान. दुनिया से आप जब जाएंगे तो आपको लोग कैसा याद करेंगे, वो आपकी करियर है. वी नो द ग्रेट फादर ऑफ नेशन. यारो, व्हाट वाज हिज एजुकेशन? द ग्रेट महात्मा ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದಿದ್ದು? ಲಾ.
He studied law in South Africa. But today, do we remember the great Mahatma Gandhi ji as a lawyer or as a father of nation? Because his identity was father of nation. Nelson Mandela ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು सिनेरियो ಬಗ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ वो अपने कम्युनिटी के लिए डिग्निटी उन्होंने दिलवाई 40 इयर्स के स्ट्रगल के बाद. डू वी रिमेंबर हिम फॉर दैट थिंग और फॉर हिज एजुकेशन, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड? यस और यस. मदर तेरेसा जानते हैं? तो वो कौन सी कंट्री की हैं? इंडिया की हैं, बिहार की, यूपी की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की? वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में शी स्टेड, बट शी वॉज नॉट इन फ्रॉम इंडिया. नो, शी वॉज फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया. She was from a very different country when she came to visit India, and she went to Calcutta, and there she saw huge number of leprosy patients, and she decided and had a vision, I will dedicate my life and leave my country, migrate to India, settle here and do service to these people. And today मदर तेरेसा को हम किस तरह याद करते हैं? एजुकेशन के लिए या एज अ नोबल पीस प्राइज विनर? She got the Nobel Peace Prize. Sachin Tendulkar का डिग्री कौन सा है? Sachin Tendulkar, he got his PhD from which university? Do we know Sachin Tendulkar for his PhD or as a god of cricket? Correct? So ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾಬ್ कनेक्शन ಇಲ್ಲ, ಅವರ आइडेंटिटी, वो किस आइडेंटिटी से दुनिया में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारा, उसको हम याद रखते हैं. तो आपका भी करियर कोई सिर्फ जॉब नहीं है, आपका करियर आपकी आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी में आप मल्टीपल जॉब्स चेंज कर सकते हैं. यू कैन हैव डिफरेंट जॉब्स, बट योर करियर इज अ जर्नी, समथिंग विच गिव्स यू अ आइडेंटिटी. योर करियर इज समथिंग विच यू ऑलवेज एंजॉय, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. योर करियर इज समथिंग वेयर अदर्स डोंट हैव टू टेल यू वो काम करने के लिए. करियर वो चीज है जो आप करते करते आपको टाइम मालूम नहीं होता. अरे रात के 2 बज गए, आई एम सो डीपली डूइंग दिस रिसर्च एंड यू डोंट नो द टाइम. हो भूख भी नहीं लगी मुझे, 11 बजे बैठा था बस थोड़ा कुछ मालूमात करने के लिए, बट इट्स ऑलरेडी 2 AM. बाद में सुबह में बोलेंगे मम्मा आई नॉक्ड योर डोर सो मेनी टाइम्स फॉर डिनर, तुम दरवाजा ही नहीं खोले. ओ रियली मम्मा, आई वॉज रियली इनग्रॉस्ड. आप वो काम जो करेंगे उसमें आपको टाइम कैसा जा रहा है आपको उसका पता नहीं चलता है. वो फील्ड, वो एरिया जिसमें आप एंजॉय करते हैं, जिसमें आपका पैशन है, जो एक जर्नी है, वो एक आइडेंटिटी है, और उस बुनियाद पर आप अपना करियर सेलेक्ट करना चाहिए. और करियर का एक और रीजन, करियर गाइडेंस का, इट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट करियर्स. इट इज नॉट द लैक ऑफ एबिलिटी. Every one of you, as I told, have ability. It is not the lack of ability, but it is the lack of awareness of different careers. And we are in which century? 21st century mein there are thousands of options available. You don't have to have a job to earn money. You don't have to go to office to earn money. Correct? 12-year-old boy in America sits in his drawing room with a camera and he just plays one video game, ಅದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ he posts. He has millions of followers from the world and he is the youngest billionaire. ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಪಡಿಬಾರ್ದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಕರಿಯರ್. ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ and he is already earning and empowering others also. So just education is not career. Like the great Mahatma Gandhi ji, you know that incident? He was thrown out of the, gutta nimagele? He was thrown out of what? Train. Ticket or tagondilla adakkoskara. He had the valid ticket. Yet he was thrown out of the running train in St. Peter, Maritzburg in South Africa. Out of the 18 countries I have visited, I went to South Africa. I went to St. Peter, Maritzburg. I went to that platform and I went to that spot where he was thrown. Currently, आ स्पॉट अली आ प्लेटफॉर्म अली उसका एक उनका लिखा है कि दिस वाज द स्पॉट वर द ग्रेट फादर ऑफ द नेशन फ्रॉम इंडिया महात्मा ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್
क्या इफ आई एम अ ग्रेजुएट ವಿತ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್? He had a vision, he came back and he gave us independence after 90 years of struggle, correct? That is his service, as one of the participants told. So money is just not your career. Mahatma Gandhi ji और ಎಷ್ಟು ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತು ಸರ್? महात्मा गांधी के पास कितने बंगले थे, कितने मर्सिडीज बेंज, फरारी, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಫರಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಲೇಕಿನ್ more than anybody as an engineer who earns crores of rupees. Today ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಮನಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್. ಸರ್ವಿಸ್, contribution, what you give to the world is your contribution. So if you think just money, ಆ ಮನಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕರಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಆ ಫೀಲ್ಡು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೋನಾ ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಡನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪೇ ಯು ಫಾರ್ 3 months. ಎವ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 1.5, 1.7 lakhs. They were not paid even single penny. Situation, you don't know what will happen. So again, service is your career. Service is your identity. Service is what people will remember you for. So that is also one thing which you have to understand. Artha aagta idya alva? Nidra barta idya? No, very good. So for all these reasons, and the last point, why you should have a right career andre, because ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ? आप लोगों ने बिग सुना है, बिग बड़ा, बिगर सुना है, बिगेस्ट सुना भी है, पढ़ा है. कभी आपने यूनिकर सुना है, यूनिकेस्ट सुना है? क्या सुना है? यूनिक सुना है. तो आप सब यूनिक हैं. तो इसलिए आप यूनिक हैं. आपके लिए कुछ करियर सूटेबल हैं, उसको मालूम कीजिए, उसको डिस्कवर कीजिए. इसलिए भी हमको करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है. आई टोल्ड यू 3 reasons आई डिफाइंड व्हाट करियर इज. पहले तो माँ बाप के हैं अरमान, टीचर्स हैं अनजान, बच्चे हैं परेशान, नंबर 1. नंबर 2, करियर इज योर जर्नी, योर आइडेंटिटी, योर पैशन, व्हाट यू एंजॉय. एंड मनी इज नॉट जस्ट करियर. Again, education also is not just career, because many people in the face of the earth, they did not make money, they are not known for money, but today they have a legacy of doing service to people, contributing to society, contributing to humanity. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕರಿಯರ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್ ಟುಡೇ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯುನೀಕ್. Right? There are 3 types of people. One, who see things happen. Right? Who see things happen. There are kind of people who, the first kind of people, they don't know what happened. Oh, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ವಿಷನ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ 10 years, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಮ್, ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಆ ತರಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದಾನ. Some people are there who don't know what happened. Second kind of people are people who just see what is happening. Struck, my friend, he is doing this. And the third kind of people is they make things happen. They make things happen. In which category you want to become? First, second, or third? And if you want to be in the third category, who make things happen, then you have to plan your career very, 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 very smartly. Artha aitalla? Good. So career I have already spoken. Now the formula. Also last point, wrong person at the wrong place is dangerous. Somebody who does not have the knowledge of medical surgery, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ರಾನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಪ್ರಾನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರೀ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಹೀ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೀ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್.
One lawyer, he does not have the knowledge of law, and if you ask him to go in the court, what will happen? Hero will become villain, villain will become hero. Correct? So similarly, the right person for the right job is beneficial. Somebody with a very authentic knowledge of medicine, somebody who has studied, gone to the process, done training, internship, under the seniors, he has done a lot of practice, then he is doing surgery, then he will operate properly. Correct? So similarly, any field for that matter, right person for the right job is beneficial, wrong person at the wrong place is always dangerous. So you should never be a dangerous person, you should always be a beneficial person. For that reason you have to plan. Fine. So now last two parts ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. There are 4 reasons, 4 misunderstandings, 4 misconceptions, गलत फहमियाँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, वो उसके वजह से हमारे स्टूडेंट्स रॉन्ग करियर सेलेक्ट करते हैं. उसमें 2 गलत फहमियाँ बच्चों ने ही बनाया है और 2 गलत फहमियाँ मिसकंसेप्शंस बड़ों ने बनाए. पहले किसका बात करेंगे, किसको पोस्टमार्टम करेंगे, आपको क्या बड़ों को? मालूम है सब दूसरों पर डालते. चलो, बड़े जो मिसकंसेप्शन क्या करे बोले तो, मेरा बेटा मेरी बेटी सक्सेसफुल स्टूडेंट कब बोले तो ओनली इफ ही और शी डज मेडिकल और इंजीनियरिंग. मने के फ्रेंड्स ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, मेहमान आते हैं, किसी के घर में 4 बच्चे हैं, वो दूसरी लड़की मेडिकल पढ़ने का एडमिशन ली. करेक्ट? मने के गेस्ट बन रहे, वो घर वाले किसको इंट्रोड्यूस करते मालूम? वो दूसरी बेटी को बुलाते, बुला के बोलते ये मेरी दूसरी बेटी मेडिकल पढ़ रही. पहली बेटी कहाँ है? अंदर बैठी रहती है, बाहर गई बोलते, बिकॉज शी इज डूइंग आर्ट्स. समाज में, सोसाइटी में वो स्टेटस, वो अपना प्राइड के माई डॉटर इज डूइंग मेडिकल, उसको इंट्रोड्यूस करने से अपना शान, अपना स्टेटस समझते हैं, और जो दूसरे पढ़ते हैं उसको थोड़ा हम कम इंट्रोड्यूस करते हैं. बराबर होता है ना ऐसे? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सक्सेसफुल सिर्फ वो लोग होते हैं जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग में जाते. बराबर? ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपको इंजीनियरिंग सूट कर रही है, अगर आप उसमें एक्सेलेंट में जा सकते हैं, दैट्स फाइन. लेकिन सिर्फ स्टेटस के लिए, सिर्फ खानदान के नाम के लिए अगर आप जाएंगे, इट इज़ अ बिग मिस्टेक. I did my engineering in Gulbarga. During 4 years, I sent 3 dead bodies to my our friends' dead bodies to their home, because they were not suited for engineering because of the family status. Because if you do engineering during marriage, you will get this much dowry. Parents pushed them, and they did not understand mathematics and physics, and they got subject back, and they wrote a letter, and they left the world. So there are so many such cases. So if that is the case, elders should actually not do this, right? There are so many other fields in which people can earn money, like wildlife photography. You know Tom and Jerry? 1 second Tom and Jerry ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? 80,000 rupees. ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 24 frames he has to draw in artistic way, then convert it through technology, and he charges so much. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗು? So there are hundreds and thousands of fields in 21st century, not just engineer or doctor. इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग का वैल्यू नहीं है. अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप कहाँ सूटेबल हो वो तलाश करो. आपको मेडिकल सूट करता है तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर. आपको इंजीनियरिंग शूट करता है तो यू आर गोइंग कैन बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर. गो इनटू इट एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. सो बड़े लोगों ने ये पहला गलत फहमी बनाया है कि सिर्फ 2 फील्ड है. नो, थिंक बियॉन्ड दैट. ओके. दूसरा जो मिसकंसेप्शन है, जो 80 and 90 स्कोर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. और वो कौन से फील्ड में जाना, कौन सा स्ट्रीम लेना, उनको आर्ट्स लेंगे तो प्रॉब्लम. उसके बाद में ठीक है छोड़ो, तुम ट्राई करे, यू डिड नॉट गेट 80-90, यू गॉट 60-70, कॉमर्स ले ले बेटा, राइट? उसके बाद लास्ट वाले ದಡ್ಡ ಮುಂಡೆ ಏನೋ ಓದಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಮರ್ತು ಬಿಡು, ಕಾಮರ್ಸು ನಿನಗೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, BA ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಹೋಗು, ऐसे बोलते हैं ना. वो 30-40 जो लेते हैं, 35 के ऊपर जो 45 में लेते हैं, उनको BA. दिस इज अवर डिमार्केशन.
राइट? ये दूसरा बड़ा मिसकंसेप्शन है. नॉट नेसेसरी इफ यू स्कोर 80 and 90 you should not take arts. You can become an author, you can become a writer, you can become a thinker, you can become a philosopher, right? Not compulsory you should only do science and get into such fields which are very very common, right? Mostly common fields ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ मिसकंसेप्शन. इवाग निम बग्गे माताडबेकल्ल. दो मिसकंसेप्शन आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, हम जब थे हम भी वही किए, अब आप लोगों को कर रहे हैं. पहला मिसकंसेप्शन जो थर्ड है वो क्या मालूम? आई विल डू व्हाट माई फ्रेंड विल डू. मेरा फ्रेंड जो करेगा मैं वही करूंगा, मेरा सहेली जो पढ़ रही है वही पढ़ूंगी. मम्मा नो, माई फ्रेंड टोल फैशन डिजाइनिंग इज वेरी वेरी सुपर्ब, सो आई एम गोइंग टू डू फैशन डिजाइनिंग ओनली. उसके लिए अच्छा रहेगा, तुमको कटिंग भी नहीं आएगा, बाद में तुमको पता चलेगा. उसके लिए वो पैशन रहेगा. तुम्हारे लिए पैशन मेहंदी डिजाइन रहेगा, तुम्हारे लिए पैशन जो है कुकिंग रहेगा. आज कुकिंग मतलब ऐसा मत देखो क्या सर किचन का बात कर रहा है. नो, आज लोग कुकिंग करके यूट्यूब चैनल बना के करोड़ रुपए कमा रहा है. यू नो, आज मास्टर शेफ कंपटीशन देखते हैं टीवी में. बड़े बड़े स्टार होटल में जो शेफ होते हैं उनकी सैलरी कितनी है मालूम? 4 लाख रुपीस. अच्छे अच्छा इंजीनियर भी नहीं कमाता है. So every career has scope, every career has option. So you can go to different fields. Not necessarily you should do a job only. You can start your own company. You can become a businesswoman. Correct? Cake, how many of you like making cakes? You can become a cake manufacturing entrepreneur. आपका केक आज सिर्फ बना के आप जो है उसका रील बना के डाले, नंबर कांटेक्ट बोले तो फुल पूरे यादगिर के बर्थडे का केक तुमने ऑर्डर मिलता. यहाँ पढ़ते हुए तुम्हें पैसा कमा सकते. मेहंदी डिजाइन, इतना ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन डालते, माइक्रोस्कोप लेके देखना, इतना मस्त डालते. और वो शादियों में जाके डाले तो यहाँ से यहाँ तक 15,000 रुपये ले रहे, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली में. दैट इज अ टैलेंट, दैट इज योर पैशन, डू इट. पीपल, डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है. विदाउट डिग्री सम मेहंदी आर्टिस्ट आर मेकिंग नॉट जस्ट लैक्स, क्रोर्स ऑफ मनी. दिल्ली में एक लड़का बैठ के कंप्यूटर साइंस की नॉलेज सीखा और सिर्फ उसका एक ब्लॉग है. वो जितने भी मोबाइल और टैब और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आता है ना, उसके बारे में नए नए टिप देता है. वो बस उसका यूट्यूब चैनल इतना फेमस है. एवरी मंथ ही अर्न्स 30 लाख रुपीस. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. 3.6 crore. So don't go with this herd mentality कि my friend is doing, I will also do. No. Have your independent thinking and think about yourself. That is the third misconception. Last misconception is I will do that course sir in which there is very big scope. Phone बरते sir I am calling from some Jharkhand. Sir मुझे ये फील्ड बोले सर जिसमें बहुत स्कोप है. बाबा स्कोप is temporary. Scope always keeps changing. When I took my engineering in the CET board, computer science full demand. ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು कंप्यूटर साइंस. सिविल इंजीनियरिंग ऑल रिमेनिंग. हमारे इधर में ऐसा था. 4th ईयर में हम जब फाइनल में पहुंचे, कंप्यूटर साइंस लेने वाला कोई भी नहीं था. सिविल इंजीनियरिंग फुलफिल. क्यों? गवर्नमेंट का पॉलिसी आ गया कि रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के thousands of crores of projects got sanctioned and civil engineers were in demand. Scope change होते रहता है. Scope is not in the field, scope is within you. Scope बाहर नहीं होता है, scope आपके अंदर होता है. आप अपने अंदर का टैलेंट पहचानेंगे, उसको एक्सीलेंट के लेवल पर लेके जाएंगे तो स्कोप कुछ भी हो जाए आप उस मैदान में आगे बढ़ते ही जाएंगे. उसको स्कोप देखकर आज लेंगे, वो फील्ड का स्कोप कल खत्म हो जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है बराबर, वो कितने ही जॉब्स के ऊपर अब कंट्रोल ले रहा है. जो लोग बहुत छोटा सीखते हैं वो इस तरह के इसमें कंपनी जब निकालती है आपको भी निकाल देंगे. लेकिन आप अपनी यूनिकनेस को पहचान के उसमें एक्सीलेंट लेवल पर जाते हैं तो एआई आ जाए, वो कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको कोई निकाल नहीं सकता बिकॉज यू हैव योर ओन यूनिक टैलेंट. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು? 4. Only engineering and medicine is successful? No, there are thousands of other careers.
ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಮೈ, ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ನೀನು ಕಲಿಸ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಒಯ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಆ ಫ್ರೆಂಡೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ वही दोस्त बोलेगा बाबा तेरे को मैं बोला क्या रे बाबा, तू लिया मैं क्या करूँ, तू फेल हुआ तो अब मैं टॉपर बना, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है. यही होता है. सो आप अपना देखकर डिसाइड कीजिए और उसके बाद में स्कोप जो है आपके अंदर है, स्कोप बाहर नहीं है, स्कोप चेंज होते रहता है. ये चीज़ों को आप बिल्कुल, ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा. ये एक्सपीरियंस, ये हमारा पर्सनल लाइफ के बुनियाद पर हम बोल रहा है. यू नो व्हाट इज़ माई इंजीनियरिंग? अभी इंट्रोडक्शन में आपने नहीं सुना, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. I did not work for mechanical industry even for 1 year. Oh, sorry. Forget 1 year. 1 month. Oh, sorry. 1 ದಿವಸ, ಸಾರಿ 1 ಅವರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪೀಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಾಬಾ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ IAS ಕೋಚಿಂಗ್. ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಭೂತ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಮ್ ಬಿ ಉಸಿ ರೇಸ್ ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಐ ದೋ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ, ಐ ಡಿಡ್ ವೆಲ್, but never worked in the mechanical stream. But I got jobs in very good software companies. I was into technical resource management, international relations management, many high profiles. I had to work for 2 different industries. But my passion was in very different field, the field of empowering people, the field of guiding people, preparing young leaders. So that's the reason I traveled 18 countries. I have so many certifications. I have met great personalities because this is my passion. Probably if I had followed my passion, now I have done 500 workshops. Maybe I could have done 2,000 workshops so far, without going into any industry. Anyways, the simple example is, if you don't have a proper choice or a decision, then you will land in your field and regret later. So these are the 4 misconceptions. Last 2 parts, ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕಾ? ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ डिस्कवर योर सेल्फ. फर्स्ट स्टेप, जोराग हेळि एल्लरू, सब लोग बोलिए. डिस्कवर योर सेल्फ का मतलब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है. किसी को मैथमेटिक्स वेरी इजी और किसी को लैंग्वेज पानी पिए जैसा, और वही किसी को लैंग्वेज बरतो कन्नಡ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು 3 ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಗಾಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ every one of us in different personalities. There are 8 different types of intelligences. Somebody, if they see nature, they have intelligent in nature. For me, everything is green. But for that natural intelligence personality, she will say, sir, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪೈಸು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೂಟ್ಸ್. 1000 ಸಲ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಲೆಫ್ಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಶೇಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಡಿಸೈನ್, ಆರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. सो अंथದ್ದು 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस ಇದೆ. बहुत लोग ऐसे हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो एकदम 5 मिनट में फ्रेंड्स हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कितना भी बात करो बोलो ओके ओके, बट इट डज नॉट मीन दैट नॉट इंटेलिजेंट. दे आर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट. दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स. इफ यू गिव दम इन इवेंट, माइक्रो डिटेलिंग ಮೇಲೆ ಅವರ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ interpersonal, they are very good public relation officers. Yes sir, who are you sir, please sit down sir, no problem sir, you sir, coffee, tea, fala, duck, okay sir, go sir, come sir, fala sir. घर में भी होता है ना, 4 बहनें होती हैं, एक बहन एकदम साइलेंट, दूसरी बहन ओ आंटी यू आर सुजाता आंटी अल्लाह, एवरी टाइम यू स्पीक टू माय मम्मी दैट दिस, ओ बन्नी ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ, ಟೀ ಬೇಕಾ, ಅದು ಬೇಕಾ, ಇದು ಬೇಕಾ. ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀನು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ. दूसरी वही बहन सेम घर में, नमस्ते आंटी, ತಂಗಿನಾ
ಇವಳು ಒಂಥರ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವ್ರು ಒಂಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು होता है क्या नहीं होता है ये हमारे टैलेंट है इस तरह से कोई खामोश रहने का मतलब दे आर नॉट इंटेलिजेंट ऐसा नहीं है दे आर इंट्रापर्सनल somebody is interpersonal somebody is तो ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯು ನೋ ರಿದಮ್ ಯು ನೋ ರಾಗ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ you are kinesthetically intelligent, right? You want movement, fastness, agility, quickness, this, right? So you have all these intelligence types, so you find that particular thing and then you have to go forward. So first process alli first point, discover yourself, go deep into it, which subjects you like, which are the subjects you have to improve, which are the subjects which are difficult for you, adanna artha madkobeku, right? How can that happen? Two ways. You can yourself do, or you can approach counselors and coaches like us. We have scientific tests, scientific methods to find out. Second, find your talent and skill. One bandbittu subject mele ಒಂದು hold. Second bandbittu talent and skill ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? discover your intelligence type. Second, discover your talent and skill. ಆಯ್ತಾ? थर्ड, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ इंजीनियरिंग ಮತ್ತು मेडिसिन सिर्फ ये करियर ऑप्शन नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ करियर ऑप्शन है, उसके बारे में रिसर्च करना. क्या करना? रिसर्च करना. ये तीसरा स्टेप. बोलिए, पहला स्टेप डिस्कवर योर इंटेलिजेंस, सेकेंड डिस्कवर योर टैलेंट एंड स्किल, थर्ड फाइंड रिसर्च डिफरेंट करियर ऑप्शंस, फोर्थ ಮ್ಯಾಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನೋ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಯುವರ್, ಥರ್ಡ್ research the various career options in 21st century, fourth match that to your personality, fifth check your value system. ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಮ್ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಏಯ್, ನೀನು ದೊಡ್ಡವಳ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬೇಡ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಮ್, ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು? ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬ ಈಸಿ. APP ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. APP ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳೇ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ APP. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ APP ಮರಿಗಾಗತ್ತಾ? ನೋ. A ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, A ಅಂದರೆ, P ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, P ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಮೋಟಾ ಹೇಳಿ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಲ APP. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ करेक्ट. सचिन ಹೇಳಿದ್ರೆ APP. समझ APP. सलमान बोला तो ऐसा बोलेगा, राइट? तो एनीवेज APP. Aptitude is nothing but your intelligence. God has given everybody intelligence. You have to find that. Second is personality. Personality and ಏನಂತ ಅಂದರೆ, हम बहुत सारे बच्चों को पूछते हैं, we ask them, बेटा what do you want to become? तो बच्चा बोलता है, सर डॉक्टर. ओके, हैव यू सीन ब्लड? सर ब्लड ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. That बच्चा will not become
ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ವಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್, 5 lakh rupees ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. that person will not be able to do professional marketing because he is homesick. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. somebody who is a introvert, ಅಂದರೆ ಬರೀ क्लोज जनक हत्र मात्राडते हैं, क्लोज घर के लोगों से बात करते हैं, नए लोगों से बात करते ही वो भाग जाते हैं, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं? नहीं बन सकते. इसलिए आपकी पर्सनालिटी को भी मालूम करना चाहिए ताकि वो राइट करियर में फिट हो. और तीसरा पी कौन सा है? पैशन. पैशन मतलब यू सी दट NGC TV, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನೆಲ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ वो पूरा रात भर वो ठंड में वाइल्ड एनिमल्स आस पास, ही वेट्स फॉर दट वन कोब्रा ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೋಬ್ರಾ ಮೌತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ನೋ ಫುಡ್, ವೈಲ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆದರ್, anything can happen, but that one moment, 3:45 when cobra opens that camera, oh my god, what a cobra open, what's so fantastic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, that is his passion. Nobody is telling him to go in the dirtiness of forest. ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪು? ಪಹला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4th स्टेप, 5th one ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಓಕೆ. ಎ ಅಂದರೆ, ಪಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು, ಇದು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಕರಿಯರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 10th, ಆಫ್ಟರ್ 10th ವಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ 12th ವಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, IAS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ for 1 hour and more, 1.5 hours, you will not get this in internet. This is purely our experience working with students, working with many schools, teachers, and seeing people not enjoying their job, seeing people who have left the job, they have good potential but not earning to that level. People think money is everything, all those things. Then we have discovered these things, and I have tried my level best to put across my thoughts on this very important topic in 21st century about getting clarity from confusion regarding your career and making a decision about career with confidence. Hope you have understood. Hope you will go back, put all your points in the notebook, and first thing, what will you do in the house today? First thing ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಯಬ್ಬಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ 4 ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 3 letter formula APPI. I wish you all the best. May God Almighty give you the strength, the capacity, the talent and skill to work hard to become great personalities and citizens of our great nation, so that you become contributors, so that you become champions, so that you become leaders and you become our nation builders. And when you go from this world, everybody should miss you and you should have a legacy. I wish you all the best. Till next time, keep learning, keep empowering, keep smiling, and keep achieving in your life. Thank you so much for all the opportunity.
Thank you very much, sir, for your energetic, enthusiastic, and joyful session, and we are very grateful to you. On behalf of Shahid, Correct, Yeah, yeah. I stopped. yeah, thank you, sir, for that. Lastly, without taking much of your time, our volunteers will distribute feedback form to you. You please fill this. We are taking this feedback form because we are on behalf of Shaheen Group in future after your SSLC and PUC, will directly from our expert counselor you will get the call regarding whatever you listen now for regarding clarity perspective, regarding whatever the options depends on your ability. All those things will be in personal, in individual level. Our expert counselor will address you after your PUC and 10th exam. So don't forget to mention the right contact numbers. Okay. Please complete the process within 5 minutes because already 6 o'clock. Thank you very much, sir, for such an enlightening, inspiring, and a practical session. Your words have truly motivated our students and provided them with clarity and confidence to plan their future wisely. We are deeply grateful to you for sharing your valuable time and knowledge with us. To formally acknowledge and express our sincere gratitude, I request Santosh sir, lecturer in botany, to please come forward and deliver the vote of thanks, please. So we had a great session. Okay, it's very wonderful moment for us. So I am here to give a vote of thanks. Okay, so as I remember one great philosopher of Karnataka, when we had a people who are so enthusiastic surrounding us, then we will get a ignite in our heart to do something. So the great personality in history of Karnataka, Mahatma Basaveshwar, he used to say in Vachana, ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲು ಹೈದ ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ. ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದಡೆ ಕಲ್ಲು ಹೈದ ಕಿಡಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ, ಬಲ್ಲವರೊಡನೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದಡೆ ಮೊಸರು ಹೊಸೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂತೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸಂಘವು ಕರ್ಪೂರಗಿರಿ ವರೆದುಕೊಂಬಂತೆ, ಕರ್ಪೂರಗಿರಿ ವರೆದುಕೊಂಬಂತೆ. Its meaning of the Vachana is nothing but, if you surrounded with the people who have a knowledge, if you get surrounded with the people who have literally an enthusiastic personality, then you will get of course shine in this world. इधर अर्थ इसका मतलब ये होता है, आपके सराउंडिंग में कैसे लोग रहते हैं, आप कौन सा इन्वायरमेंट में अपने आप को ढलते हैं, आपके सराउंडिंग बातचीत करने वाले लोग कैसे हैं, अगर उनके साथ हम रहेंगे ना, उसी तरीके का हमारा पर्सनालिटी बनेगा, देन यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. So this is a great personality. Today we have our great counselor, motivator, who used to give a path. We used to say that a pathfinder. Okay, हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए आज हमारे इंस्टीट्यूशन में पधारे हैं मिस्टर अतिकुर रहमान sir. Thank you so much, sir, by having you. It's very wonderful session. So I am here to give vote of thanks. Okay, so as I inculcated already their words, okay, respected member of the management, our honorable principal, esteemed guest speaker, respected dignitaries on the dais, teacher and dear student, I had this script as a very good evening. After hearing sir, I have changed a very marvelous evening to all. I inculcated already. Okay, this is nothing but a learning. In my profile, I used to mention is that I am not a teacher. I am learner as well as teacher. I used to learn lot of things from student as well as management as well as a principal. Lot of things I used to learn every day. Okay, by saying this one, I am very thankful, sir. Today I got you. So thank you so much, sir. So on behalf of Shaheen Vision School College Adgiri, I express my heartfelt gratitude to our respected management
for their constant guidance and vision which made this program possible. I sincerely thank for our honorable principal for his leadership, encouragement throughout the planning and execution of this great event. I extend my sincere thanks to our esteemed resource person, Mr. Atikur Rahman sir, for his valuable time, insightful guidance and inspiring career counseling session that has truly benefited for our students. As I also thank all the dignitaries from various institutions for gracing this occasion with their presence and encouragement, my sincere appreciation goes to all the teaching and non-teaching staff for their dedicated efforts in organizing this program successfully. Okay, last but not the least, I thank all students for their disciplined participation and keen interest which made this event meaningful, successful. Thank you one and all. Okay, to complete, to end up to this evening, I want to say this one share which is very famous, which was said by Allama Iqbal regarding Shaheen. I think everyone know this one. Even though I want to remember, being a Shaheenian, I am the member of Shaheen, nothing but I am student of Shaheen. Okay, so that's why I used to remember this one. नहीं है तेरा नशेमन कशे सुल्तानियों के गुंबज पर, नहीं है तेरा नशेमन कशे सुल्तानियों के गुंबज पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों. थैंक यू सो मच सर. इधर से बिलोंग करते सर. वन मोर अनाउंसमेंट. अभी जैसे कि टाइम लैग रहने की वजह से ये फॉर्ಮ್ अपने अपने घर पे ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ನಂತರ ಅದು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಅವ್ರು PDF ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. इसको सबमिट करने का ये बेनिफिट है कि अगर आप फॉर्म में आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आप वो कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं तो 10 के बाद 10वीं के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको किस फील्ड में जाना है. उस फील्ड में अगर जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से. जो जो स्कीम्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है वो सारे चीज़ें बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के काउंसलर्स हैं, जो शाहीन आप लोगों को बात करवाएंगा उनसे, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो प्रॉपर अच्छे से डालना. उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. आप घर बैठे आपको कॉल आएगा, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कॉल आएगा और वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि 10वीं के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.